ओके 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 ठीक है। इनके इवेंट नहीं खत्म होते, बहुत ज्यादा इवेंट होते हैं। सो थैंक यू सर। ये वीकेंड की क्लासेस मैं बेशक रिकॉर्ड कर दिया करूंगा, लेकिन स्टिल द बेनिफिट यू गेट इज दैट यू आस्क क्वेश्चंस। जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देखते हैं उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो बार बार क्वेश्चन कर सकें, तो दे जस्ट हैव टू लिसन एंड नोट इट डाउन। सो दिस वाज द ब्रेक डाउन ऑफ द पेरीमीटर 400 meters, कि उसमें हमारे पास रेक्टेंगल है 100 100, एंड देन वी हैव टू सेमी सर्कल with the same diameter, so 100 100 each over here as well. Now the length of each circular arc is 100 meters. Okay, ये उन्होंने भी मेंशन कर दिए। And calculate d. So to calculate d हम लोग क्या कर सकते हैं? We can use uh, circumference formula, 2 pi r divided by 2, क्योंकि it's half of the circumference. आप आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सो इट्स योर चॉइस, दोनों यूज कर सकते हो, इज द सेम थिंग। आर्क लेंथ में हमने क्या पढ़ा था? बिकॉज इट्स अ सेमी सर्कल, सो क्या होगा? 180 बाई 360 इंटू पाई 2 पाई। इस 2 पाई आर को कहना है राइट पाई डी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर। कैन आई राइट इट लाइक दिस एज वेल? यस। इनाया, कैन आई राइट इट लाइक दिस एज वेल? 2 पाई आर को पाई डी भी लिख सकते हो? ओके, सेंड योर आंसर्स टू द co-host अकाउंट, उधर सेंड करो मुझे। ठीक है, either you I can use arc length or I can use the formula for uh, the circumference, because this is a circumference of a semicircle. So that is why I can say it's 2 pi r divided by 2, or pi d, okay, divided by 2. So you have multiple options. Now for this one, arc length हमें given है, that is how much? 100. This will become 1 by 2 into pi d. So d is equal to 200 divided by pi, and the answer should be this. Okay. Next, B part, calculate the total area of the region inside the running track. Running track के inside हमने देखना है total area. Total area के अंदर क्या क्या combine? What shapes can you see in this total area? Yes, Saida बच्चे, were you able to get this answer? Yes, Saida. Okay. आरिज बच्चे, आपका ये आंसर आया बी पार्ट का? नो सर। ओके, आप मुझे बताओ, इसके अगर मैंने अंदर वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, किस तरह की शेप्स नजर आ रही हैं आपको? क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी है। सर 2 सेमी सर्कल और 1 रेक्टेंगल। Yes. So the total area will be, we have two semicircles plus a rectangle. So दो semicircle का हमारे पास जो एरिया आएगा, that will be 2 pi r square by 2, है ना? दो semicircles हैं,
Wait. So 2 times pi r squared by 2 क्योंकि सेमी सर्कल्स है प्लस द रेक्टेंगल which is 100 टाइम्स क्या करूंगा रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ और विड्थ क्या आई है व्हाट इज द मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे बाय व्हिच नंबर 63.2 63.7 ओके सो आंसर क्या आएगा इसका it should be within this range the answer I'm getting this ओके वन मोर थिंग ये आर की जगह जो मैंने की है ना यहाँ पे आर की जगह क्या यूज होगा हाफ ऑफ 63.7 okay so the half of 63.7 this and this will cancel out pi this will be 31.31.7 31.85 तो फाइनल आंसर आप लोग का इसी के बीच में आ रहा है ना my answer is 9552.9 okay let's move on to C part C part के अंदर हमारे पास S is the starting point अब ये थोड़ा केयरफुली करना S is the starting point and finishing point for a 400-meter race for a runner in the inside ठीक है a runner in an outer lane is always 3 meters from the inner perimeter so ये जो पॉइंट S है ये वो वाली डिस्कशन हो रही है कि a runner was running inside this track ठीक है अब उन्होंने एक आउटर ट्रैक भी दी outer track is always how much 3 meters away from this one ठीक है ये ट्रैक जो था पहला वाला उससे 3 मीटर्स के फासले पे वो भाग रहा है ऑल अराउंड ये जितने भी है ये जितने भी डिस्टेंसेस है बिटवीन द इनर ट्रैक एंड द आउटर ट्रैक इट्स 3 meters ऑलवेज द रनर इन द आउटर लेन स्टार्ट्स एट ए वो ए से स्टार्ट करता है एंड रन 400 मीटर एंड फिनिशेस एट टी ये जो इनर ट्रैक था इसकी लेंथ इसका पेरीमीटर क्या था हमारे पास इनर ट्रैक का पेरीमीटर क्या था एनीवन Mahmood what was the inner perimeter of the inner track yes Ifra it's 400 and what about 400 यप यहाँ पे कहाँ कितना होता है it starts with A and it will finish at T और ये सारा 400 meters होगा तो इसका मतलब ये जो आउटर ट्रैक है ये थोड़ा सा बड़ा है उससे कितना बड़ा है दैट इज व्हाट वी हैव फिगर आउट बाय कैलकुलेटिंग द RTA यही उन्होंने पूछा है आपसे कि ये आपने फाइंड ओके नाउ इफ यू लुक एट दिस 400 meters अगर ये 100 meters था यू कैन लुक एट द पिक्चर अबव अगर ये 100 meters था तो इतना पोर्शन ये पोर्शन कितना होगा दिस शुड बी यस
100. That as well. And if this was 100, तो ये कितना होगा? 100. That as well. Yes. अब इशू आता है ये सेमी सर्कल, राइट? वी हैव टू सी, क्योंकि इनकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, बाय हाउ मच इट हैज इंक्रीज्ड वी कैन फिगर इट आउट बाय यूजिंग समथिंग. यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा ये डायमीटर गिवन था, हमने फिगर आउट कर लिया था ये डायमीटर. द लेंथ ऑफ डी ओवर हियर वाज क्या था? 63.7. तो ओ एस कितना होगा? कैन आई से 63 बाय, क्योंकि उसका डायम रेडियस है, तो ओ एस विल बी 31.83. ओके, ओ एस हमारे पास आ गया 31.83. नाउ द आर्क लेंथ ओवर हियर, अच्छा मैं इसको जरा लेबल भी कर ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. लेट्स से दिस इज टी एंड यू वी एंड दिस इज डब्ल्यू. ओके, सो द आर्क लेंथ टी डब्ल्यू, अगर मैं टी डब्ल्यू फाइंड करना चाहूंगा, दैट शुड बी this was 31.8, right, plus 3 over here, and यहाँ पे भी 31.8 है, plus 3 over here as well. ओके, सो डायमीटर के अंदर हम लोगों ने इन टोटल कितना ऐड किया है? 6 to it. सो आर्क लेंथ में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट इज थीटा विच इज 180. ये मैं पूरा टी डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ ओवर हियर, मैं इसको हाईलाइट करूँ, दिस पोर्शन मैंने फिगर आउट करना है कि हमारे पास सेमी सर्कल वन कितना रहा है. दैट विल बी 180 by 360 into pi 2 pi r या pi d. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे r जो आ रहा है दैट इज 31.83 plus 3, so that is 34.8. समझ आइए इस पॉइंट की? एटीन पॉइंट, यस बच्चों ये तो मैंने कल करवा लिया ना. दिस इज फॉर दोज हु आर आस्किंग, सारा, जिनसे ये थोड़ा सा, जिनको इशू आया था इसमें. ओके, सो द आंसर ओवर हियर विल बी 109.42. इफ टी डब्ल्यू इज 109.42, व्हाट अबाउट यू वी? ये वाला क्या होगा? इफ्रा, what will this be? It will be the same. It will be the same, right? अब हम फिगर आउट कर सकते हैं टोटल आउटर लेन पेरीमीटर. That will be arc length of या सेमी सर्कल TW, ठीक है, प्लस द सेमी सर्कल या आर्क लेंथ ऑफ UV प्लस द लेंथ TU एंड प्लस द लेंथ VW. इन सबको ऐड कर दो आप. सो वी हैव 109.42
+109.42। इनको टाइम्स 2 भी कर सकते हो आप लोग, मैंने सिर्फ स्प्लिट कर दिया इसको सो दैट अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आसानी हो। So the answer will be 418.84. Right? Now they were saying कि हमारे पास आर्क लेंथ ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला, what should that be? कितने का डिफरेंस आ रहा है 400 और इसके अंदर? आर्क लेंथ टी ए इनाया बच्चे कितने का डिफरेंस आ रहा है? Yes, that will be the outer perimeter minus the inner perimeter. ये टी ए ही तो डिफरेंस है उसका, that is 418.84 minus 400. So this is your answer. Inaya and Saida, is that clear? Ismail? Okay. And then they are saying O is the center of the semicircle part of the track. Calculate Yes, sir. AOT. Okay. So arc length AT आपके पास निकला है. You can go in using the same formula, and but this time you have to find the theta over here. ठीक है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि आर्क लेंथ आपके पास आ गई है, दैट इज 18.84 अकॉर्डिंग टू माय आंसर, एंड AOT आपका थीटा है डिवाइड बाय 360 into 2 times pi, and R will be 34.83. 31.83 के अंदर 3 ऐड किया है, that is why. So when you make AOT the subject, आपका आंसर इस रेंज के अंदर फॉल करना चाहिए, approximately 31. Alright, question 5 हो गया था सारों से? If that is done, we can move on to the previous worksheet related to bearings. Yes, एक वर्कशीट रहेगी थी ट्रिग्नोमेट्री की, मैंने कहा था कि मैं करवाऊंगा थोड़ा सा, उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं बेरिंग्स वाले. यस इफ्रा, आस्क. सर मेरा पार्ट बी में पार्ट 2 का आंसर आ गया था, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई. ओके, पार्ट 2 का आंसर भी आ गया था और समझ नहीं आई? यस सर. ओके, गुड. सो पी एंड क्यू आर पॉइंट्स. सारा बच्चे आपका तो हो गया होगा, है ना? यस सर, Yes. कर लिया था मैंने. Good. So we are dealing with some sectors over here. ठीक है, ये वाला सेक्टर जो है उसके लिए 130 डिग्रीज है, और ये जो आउटर वाला सेक्टर है, मेजर सेक्टर, उसके लिए एंगल क्या बन रहा है हमारा? 230. 230. Okay. Now calculate the area of triangle POQ. POQ का अगर हमने एरिया निकालना है, POQ, this triangle over here, इसकी बात कर रहे हैं. If I want to figure out the area of this, हम क्या यूज कर सकते हैं? This is 4. This should also be 4. Inaya, what should I use? Which formula should I use to calculate the area of triangle POQ? Yes, Inaya? Yes, I'm asking what formula should I use to calculate the area of this triangle POQ? Which formula?
एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे. Which one should I use? 1/2 into, yes, good, AB sin C. AB जो होते हैं, they are the two sides, neighboring side, so 4 and 4, and C जो होगा, that will be the angle in between. Angle in between is 130. So there you go, you get 6.13. Second part के लिए calculate the area of the major sector shown unshaded in the diagram. Okay. मेजर सेगमेंट उसने कहा है, सेक्टर नहीं कहा, मेजर सेगमेंट का है. और सेगमेंट हमने क्या कहा था कि इफ वी ड्रॉ अ कॉर्ड लाइक दिस, ये कॉर्ड जो है दो सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, एक तो शेडेड है और एक अनशेडेड है. द अनशेडेड वन, ये किस किस को इशू आया था इस वाले में? हाँ बच्चे, सारों को आता है. गुड, ये टेस्ट में पता चलेगा. ये सही था बच्चे. कैन यू टेल मी कि अनशेडेड सेगमेंट जो है उसके अंदर कौन सी शेप्स हैं वहां पे? A semicircle type figure and two triangles. Are there two triangles or one triangle? One triangle. And is this a semicircle or a major segment? Major segment. Yes. So be careful, बच्चे. ये छोटी छोटी mistakes ही. So triangle POQ plus the major segment, area of major segment. Major sector, sorry. Major sector POQ. So triangle का तो हमने निकाल लिया, that is 6.13. Major sector कैसे निकलेगा? We will be using the angle 230 theta over 360 into pi r की जगह हमने यूज करना है 4 square, and this will get you the answer. Ifra, is that clear? Yes, sir. Okay. Now let's move on to trigonometry worksheet. So where is it? This one over here. इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन कर लिया था. इट वाज प्रॉब्ली कौन सा वाला था? दिस वन है ना, ये हमने कर लिया था. Yes or no? If I remember it correctly, it was this question. Is it so? संडे को सारी नींद में आप लोग. यूसुफ, आरिज, महानूर, switch on your cameras. Talha, switch on your camera. सारा, सारा बच्चा आपका काम कैमरा काम करता है कि नहीं करता? हाँ सारा, does your camera work or no? Then why can't I see anything? It's a black screen. Inaya, switch on your camera बच्चे. Okay, question number 7 से हम start कर लेते हैं, right? So the diagram shows 4 points A, B, P and Q, right? B is due south of A. अच्छा ये भी बच्चे बहुत ख्याल करना है आपने. B is due south of A. B जो है A के साउथ पे है, right? तो and P is due east of A. P जो है A के ईस्ट में है,
ये इसके साउथ में है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है, एक चीज उसके ईस्ट में है, एक चीज उसके साउथ में है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस? What is the angle between the directions? It's always 90 degrees. So without them telling you कि ये एक 90 एंगल बन रहा है, मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे दिया। बी केयरफुल व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट्स। ये वो चीज होती है कर दे कि ठीक है डायग्राम दी हुई है तो हमने स्टेटमेंट पढ़ के क्या करना है ना। This is 90 degrees. Now calculate ABP. ABP किधर है हमारे पास? ABP ये वाला, this angle over here. This is what we have to calculate. How can we calculate it? Yes, Yusuf, which आप बता सकते हो? How can we calculate this angle over here? Sine rule. Yes, Yusuf. Good. Because we are dealing with a right angle triangle, so हमारे पास we can use help from these ratios, sine, cos, tan. That reason हमने figure out करना है बच्चे कि वो reason क्या थी. Okay. With sine. Okay. So it will be opposite हमारे पास given है and hypotenuse हमारे पास given है. So we are going for sine. So sine theta which is ABP. इसको आप theta भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो. This opposite is 3.73 divided by the hypotenuse which is 5.47. Now ABP आपने sin inverse लेना भूलना नहीं है बच्चे. Sin inverse of it 3.73 सारा यही हुआ साइन इनवर्स के बारे में 5.47 यही इशू हुआ था। सिर्फ साइन इनवर्स के साथ किया तो इट्स शोइंग मैथ एरर। अच्छा आपको गुड, वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करती हूँ, काफी दफा ट्राई किया है। हाँ श्योर। अच्छा डू चेक योर कैलकुलेटर कि वो डिग्री मोड में है कि नहीं है, रेडियंस में तो नहीं है। सर इस कैलकुलेटर को लास्ट सेट आपने ही किया था स्कूल में बेयरिंग्स पढ़ाते हुए, उसके बाद से कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, और तब भी इशू था है ना। यस। सो अच्छा डू इट इंडिविजुअली, पहले करो 3.73 डिवाइडेड बाय 5.47, so that will be sin inverse of 0.6819 है तो 2, ठीक है यहाँ तक आ गया। अब आपने साइन इनवर्स मतलब शिफ्ट साइन का बटन दबाना है, साइन इनवर्स एंड देन प्लग इन 0.682। नाउ चेक, नाउ इट्स सेइंग 43.0। हाँ मुझे पता है क्या हो रहा था, अब मुझे समझ आ गया। यू वर राइटिंग इन योर कैलकुलेशन, ये बड़ा अच्छा हो गया कि एक गलती होगी। समटाइम्स अ मिस्टेक कैन बी अ गुड फॉर्म ऑफ लर्निंग। सो यहाँ पे हुआ क्या है, व्हाट सारा वाज डूइंग, साइन इनवर्स she was writing in calculator 3.73 divided by 5.47. Calculator क्या करेगा, it will take the sine inverse of this and then divided by 5.47. So whenever you have something like this and you have to calculate as a whole, you add brackets to it. Alright, calculator के अंदर brackets के आपके पास होंगे signs, you add brackets to it. Alright.
अगर एक साथ करना है, अगर अलग अलग करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन. So 43 degrees. Next, so ये तो हमारे पास 43 आ गया. Now calculate PQ. PQ find करने के लिए let me highlight it first. This is the length they require. मुझे बताओ, is triangle APQ, ये पूरा का पूरा triangle, is this a right angle triangle or a non-right angle triangle? It is not right angle. It's not a right angle triangle, no? So we are left with two kind of rules, that is sine rule and cosine rule, है ना? कौन सा applicable है यहाँ पे? Do we have a complete pair? Can you see any complete pair? APQ triangle के अंदर कोई complete pair नजर आ रहा है? Complete pair of opposite angle and side. Yes. What can you name it? The complete pair? AQ and AP. No, मुझे जो हम पेयरिंग करते हैं ना, वो एंगल एंड साइड करते हैं. ऑपोजिट एंगल तो मतलब 25 डिग्री जो है वो किसके ऑपोजिट है, कौन से साइड के? UP. PQ. Okay, is this Saida? Yes, then. Oh, Saida Bashir, this question was not for you. Sorry. This is further trigonometry grade 10 के लिए. Okay. So if you want to just look at it, then it's fine. Otherwise, I think that was enough for you. Okay. Thanks. Can I leave? You're welcome. Yes. Love is. So this one over here, opposite pairing अगर हम लोगों ने की है, so हमारे पास कोई complete pair नहीं है. So we are left with cosine rule. Cosine rule के अंदर हम लोग क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन थी कि all three sides are given, और the second conditions all sides given. Second condition कौन सी थी? We have a side, angle, side. दो neighboring sides होंगी और बीच में एक angle होगा. So this condition is being fulfilled. So हम sine rule apply करेंगे. Oh, sorry, cosine rule. You have two sides and an angle in between. ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों का लिखना जरूरी नहीं है ये. Two sides and an angle in between. इसको अप्लाई करने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मेट्स पढ़ाए थे. Because the length of PQ, so PQ का स्क्वायर is equal to PQ के अलावा दो कौन सी साइड्स हैं? PQ के अलावा दो साइड्स कौन सी हैं? और AQ, ट्रायंगल AP. APQ में. Yes. So I will square them and add them together. ये थोड़ा सा वो जो फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया था, you have to learn it, how to apply. You add the other two sides, square them and add them together, minus 2 times the same other two sides, 3.73 into 5.32, and you will take the cos of which angle? 25. Yes, we will take the cos of 25, which is the angle opposite to the missing side. इस missing side के opposite जो angle होगा उसका आपने cos लेना है. So that is 25. Okay. So this is one way of learning the cosine rule. So PQ, you will take an under root of, ये सारा calculate करो मुझे ज़रा, क्या value आ रही है? So we have 6.246. That's correct, Ifra. Good. 6.246.
And when I take an under root of this, your answer 44 something, 2.44, 2.499 something. So we have approximately 2.5 kilometers. Okay. 2.5 kilometers. Arish, which are you joining from another device? Okay, now C point. A boat sailed in a straight line from Q to A. Find the bearing of A from Q. So इसका मैं जरा एक स्क्रीनशॉट लेके नीचे ले जाता हूँ so that we understand कि अब क्या होना है. So a boat sailed in a straight line from Q to A. Q से A की तरफ गई है straight line के अंदर. Over here, like this. Find the bearing of A from Q. Now, to work it out, हम लोग क्या कर सकते हैं? Is it Bearing of A 245? from Q. हमारा कम. Who was that? किसने कहा बच्चे? Sir, मैंने कहा. Yes, Manur, good. That the answer is correct. बाकियों का आंसर यही है. I am giving you a minute to figure it out. अगर आप लोगों ने नहीं भी किया तो you have a minute to figure it out. Bearing of A from Q. इस टॉपिक में मुझे किसने कहा था मुझे ज़्यादा इशू आता है? सारा 240. एक आपने ज़्यादा क्यों कर दिए? खुद से दिल कर रहा था. ये सारा ये जो 1 डिग्री आपने खुद से ज़्यादा किया, आंसर वाज 245. 246 आपने क्यों किया? यू डोंट नो. ठीक है. अच्छा, वे शुड आई मेक द कंपास? इनाया, वे शुड आई मेक द नॉर्थ या कंपास? कहाँ पे बनाऊं? एट ई. सारा बच्चे एक बताओ. ए क्यू. सर क्यों था वो ऑटो करेक्ट ने उसे ए कर दिया आई डोंट नो व्हाई अच्छा, ठीक. मैंने क्यों लिखा था यस, इनाया बच्चे बताओ. वे शुड आई ड्रॉ द नॉर्थ या कंपास? कहाँ पे बनाऊंगा? एट क्यू. वेल डन. So I'm going to draw the north at Q over here. Q पे मैंने north बनाया. Now, if I look at the north of A, अगर मैं A के north को देखूं और Q के north को देखूं, can I say they are parallel to each other? ये दो parallel है ना? Yes. Yes, Anaya. Are they parallel to each other? Yes. So I can see कि A और P के बीच में किस तरह का एंगल बन रहा है? Oh, sorry. ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन रहा है? A और P के बीच में 90 degrees, right? So if I exclude 25 from it, ये कितना बनेगा? ये वाला एंगल कितना बनेगा? 65. 65. So this angle is 65 degrees. Now you can see कि ये हमारी शेप किस तरह की बन रही है. The north and north के बीच में किस तरह की अल्फाबेट की शेप बन रही है? नाया, it's the question from you. What kind of an alphabet, if you remember, हम लोगों ने parallel lines के बीच में एक alphabets की बात की थी.
नो, हमने जो अल्फाबेट्स की बात की थी दैट वाज अ जी शेप, दैट वाज एन एफ शेप, दैट वाज एन एक्स शेप एंड दैट वाज एन सी शेप. कौन सी शेप बन रही है? इट्स अ सी शेप. सी शेप में हमारे एंगल्स किस तरह के होते हैं? व्हाट डू यू कॉल दोस एंगल्स? You forgot. Supplementary angles, बचिए. The sum of the two angles formed between these C shape should sum up to 180 degrees. इनका sum 180 degrees के equal होना चाहिए, right? Okay. So 180 degrees के equal अगर होगा, that would be 180 minus 65, it's 115 degrees. Okay. Now bearing हमें कौन सी चाहिए होती है? बेरिंग का रूल हमारे पास है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ दैट पॉइंट, क्योंकि नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया है, एंड वी मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल आई रीच दिस लाइन ए. सो दैट विल बी 360 minus 115, 245. सारा अभी 246 आ रहा? नो यस, सर, अब यूसुफ नहीं, गॉट. मैंने उसको 65 की बजाय 64 ले लिया था इसलिए। ठीक है. इनाया, गॉट इट? ओके. अ लाइट हाउस इज सिचुएटेड एट ए. अच्छा, ये पार्ट में किससे पूछ लूँ? अभी से है, रेज योर हैंड. And I'll give you exactly 2 minutes to work it out as well. So हम लोगों ने जो किया है वो यहाँ पे ये ही किया हुआ है. I'm going to copy this ताकि you have an understanding what is happening. ये लो, you have the diagram, you have the question, work it out. They have linked several topics in this, क्योंकि जितने भी सब topics हमने पढ़े हैं trigonometry के, almost they have summed it up into a single question. One last minute. And you have to write the answer and send it to the coast account. ऊंचा किसी ने नहीं बोलना. यूसुफ का आंसर आया है, दैट इज, ठीक है बच्चे. यूसुफ, हम देख लेते हैं इसको कि क्या हो सकता है इसके बारे में. एंड लास्ट 30 seconds, वर्क इट आउट जल्दी जल्दी. इस्माइल बच्चे, मैं आपकी तरफ आने वाला हूँ, तैयार हो? इस्माइल बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछूं या इफरा से पूछूं? आप उसमें डिसाइड करो. इस्माइल, आर यू देयर? यस सर। आपसे क्वेश्चन पूछूं या इफरा से पूछूं? सर आपकी मर्जी। ठीक है. सो टेल मी द आंसर. क्या आंसर है आपका?
सर मेरा 16.7 आया। Well done. Perfectly tight. Ifra, what about you? सर मुझे नहीं समझ आ रही इसको। Okay, that's fine. तो फिर आपसे क्वेश्चन बनता है. So, the top of the lighthouse is 30 meter above sea level. एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी. In the start, they said the diagram shows 4 points A, B, P, Q at sea level. है ना? यही कहा था ना उन्होंने. यस सर। अब मुझे बताओ, अगर A, B, P, Q है, ये जितने पॉइंट्स, अब ये देखो उन्होंने जो ड्रॉ किया है, आपको लग ऐसे रहा होगा कि ये ए पॉइंट जो है ये बी के ऊपर है, ये पी जो है क्यू इससे ऊपर है ना? लगता तो ऐसा ही होगा, लेकिन बिकॉज यू आर स्टक विद 2D प्लेन, तो 2D में व्हेन वी ड्रॉ समथिंग इट विल बी शोन लाइक दिस, है ना? इन रियलिटी वेयर आर ऑल दीज पॉइंट्स ए बी पी क्यू, क्या ये ग्राउंड लेवल पे ही है, मतलब सी लेवल पे ही है, या ये एक दूसरे के ऊपर कुछ शो होंगे? नहीं सर, सी लेवल पर। सेम लेवल पे होंगे, राइट? नाउ यस सर। इफ आई ड्रॉ, अच्छा इससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं. लुक एट द कॉर्नर्स ऑफ योर रूम. कॉर्नर्स ऑफ योर रूम, कितने कॉर्नर्स हैं? मोस्टली 4 ही होते हैं, है ना? यस सर। जब तक किसी ने कोई और फैंसी चीजें ना डाल दी. तो आर ऑल द कॉर्नर्स ऑफ योर रूम एट ग्राउंड लेवल? यस सर। ओके. नाउ इफ आई से कि किसी एक पॉइंट से, एंड लेट मी ओपन द एप्लीकेशन, मे बी दैट कैन हेल्प. किसी एक पॉइंट से आप ऊपर की तरफ देखो, राइट? वेट, if I can, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये घर है, राइट? दिस इज द हाउस, एंड ये देखो ये 4 कॉर्नर्स हैं, है ना? नजर आ रहा है सारों को? यस सर। ओके. नाउ इफ आई ड्रॉ अ पॉइंट फ्रॉम हियर, दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये देख रहे हो? इस पॉइंट से आप सीलिंग की तरफ ऊपर देखो, एंड देन लुक एट द अदर कॉर्नर. तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है बच्चे? दिस, दिस एंड दिस. द टू कॉर्नर्स एंड द सीलिंग, बीच में किस तरह का एंगल बन रहा है एट दिस पॉइंट? यस इफरा, ये सीलिंग पे एक पॉइंट है, राइट? ये आपका ग्राउंड लेवल पे है और ये भी ग्राउंड लेवल पे है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा? लुक एट योर रूम, अपने रूम में देखो. सर 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज, है ना? अच्छा, लेट्स टेक अनदर पॉइंट. आपने सीलिंग वाला पॉइंट ये रखना है, ग्राउंड वाला पॉइंट भी ये रखना है. अब मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा. लेट्स से इट्स ओवर हियर. अपने रूम में किसी भी एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल बीच में इधर ले आओ, लाइक दिस. ओके, ये मैं बीच में ले आया हूँ पॉइंट. नाउ टेल मी कि ये जो सीलिंग से अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, तो इस पॉइंट के ऊपर एंगल क्या बनेगा एट दिस पॉइंट? 90 डिग्रीज। अगेन 90 डिग्रीज, है ना? यस सर। यस. ओके, लेट मी टेक द पॉइंट ओवर हियर. अगर मैं इधर ले जाऊं ये पॉइंट, और फिर मैं सीलिंग से देखूं, इस पॉइंट के ऊपर फिर से ट्राई एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्रीज। Again 90 degrees. So just remember one thing. If there is a point and something is vertically above it, so no matter wherever you take the point, it will be always 90 degrees. इस point को मैं इधर ले जाऊं, उधर ले जाऊं, इधर ले आऊं, the angle will always be 90 degrees at this point. Is that clear? यस सर। Arij, Sara, Manur, Anaya, is that point clear?
ये समझना बहुत जरूरी है. गॉट. Yes, sir. ठीक है. So now if we move on to the worksheet, कौन सी गई ये? Okay, now they're saying a lighthouse is situated at A. So इन points को ना आप अलग अलग से देख लिया करो. So ये point A था, right? ये भी ground level पे है, B भी ground level पे है, P भी ground level पे है, Q भी ground level पे है. बेशक उन्होंने बनाया उस तरीके से. A lighthouse is situated at A. एक लाइट हाउस ए के ऊपर होगा या नीचे? समंदर के अंदर तो नहीं होता ना लाइट हाउस, No, sir. है ना? गॉड. सो लेट्स से दिस इज द लाइट हाउस एल, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? 30 meters. 30 meters above ground, point A, above sea level, है ना? And there is a boat. Calculate the angle of depression of the boat from top of the lighthouse when the boat is 100 meters from A. अब ये बोट जो फिर रही होगी ये भी समंदर के ऊपर ही होगी या समंदर के नीचे होगी? It's not a submarine, Yes, sir. है ना? So it will be above. So let's say the boat is over here. This is, let's say, boat. कितने डिस्टेंस है ए और बी से बोट का? 100 meters. 100 meters. Now angle of depression कैसे बनता था? एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता था या ऊपर की तरफ बनता था? नीचे। नीचे की तरफ से. सो कौन से पॉइंट से नीचे? ए पॉइंट से या एल? ओवर हियर एल। द लाइट. यस, क्योंकि अगर आप ए से देखोगे तो ए से नीचे तो आपको मछलियां नजर आएंगी, है ना? सो यू हैव टू लुक एट द बोट फ्रॉम पॉइंट एल, राइट? एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनेगा लाइट हाउस के ऊपर से व्हेन यू आर लुकिंग एट बोट. एक और चीज थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक टाइप ऑफ साइट से बनता है. कौन सी टाइप ऑफ साइट होगी? Horizontal line of sight. Horizontal line of sight. So when you are standing at point L, so let's say this is the point you are standing at, ये आपकी horizontal line of sight होगी, which is going to be parallel to the surface of the sea, right? Parallel to the surface of the sea. And when you are looking down towards the boat, so this is the angle of depression which is going to be made. ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लगे, वरना once you understand the concept you can easily do it. Angle of depression, right? अब मुझे ये बताओ, हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और एनीथिंग वर्टिकल, इसके बीच में एंगल क्या बनता है? 90 degrees. 90 डिग्रीज, राइट? और एक और चीज पढ़ी थी हमने कि व्हेन टू थिंग्स आर पैरेलल, फॉर एग्जांपल दिस इज पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन ओवर हियर, इफ दीस टू आर पैरेलल, राइट, एंड दिस इज अनदर लाइन, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक और लाइन आती है, वी कॉल दैट Transversal. ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल में ये किस तरह की शेप बन रही है? आप Z shape. it's a Z shape. So if the angle of depression will be the same as this angle, you know, Yes, sir. so if you can figure out this angle, you can figure out the angle of depression. Yes or no? Yes, sir. So can we find this angle? Yes, sir. Because this is 90 degrees, we have a right angle triangle, we have an opposite given to us, we have adjacent given to us. What are we going to use? Tan theta. Tan. Good. किसी को ना समझ आया हो? Anyone? So tan theta is equal to opposite, which is 30 over 100. सारा बच्चे वो गलती दोबारा नहीं करनी. कैसे करोगे आप? You will be using theta is equal to tan inverse, and अगर कैलकुलेटर में आपने करना है तो you use brackets. So the answer is 16.6. 16.6.
6, 7 something. Is that clear? ओके सो बच्चे इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं कुछ और क्वेश्चंस भी हैं समथिंग रिलेटेड टू दैट बी केयरफुल विद द कॉन्सेप्ट यू जस्ट लर्न ठीक है ये जो आपके वही आप मैंने आपको कहा था कि एग्जांपल आपको रूम के थ्रू ही देख लिया करो कि ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द ग्राउंड एक पॉइंट इज वर्टिकली अबव इट देयर विल बी ऑलवेज अ 90 डिग्रीज एंगल जब भी आप ट्रायंगल बनाओगे ओके ओके दैट वाज इट एनी क्वेश्चंस